Dear students of class 10th, today on 9th June 2021, I feel happy to be with you in today's my offline class on one of the interesting poem that's called The Snowdrop, written by Edward James Hawkes, or simply he has also been called by the name Ted Hawkes. Dear students, I will brief you about the whole poem in a few parts. Firstly, we will take up a small section about the poet, that is, about the poet and summary of the poem. I will make you aware about the life history of the poet and the summary of the poem. Then I will brief you about the moral of the poem Snowdrop. This is the writer or the poet who has written this Snowdrop, who was born in a rural village in 1930. Dear students, the father of the author of the father of the poet Ted Hawkes. Actually, we can read it Hawkes, but the actual pronunciation is Hughes. We can say him Ted Hughes. The Ted Hughes was born in 1930, belonging to a rural village. His father was actually a war hero who fought in the World War First and became the hero of the war. So this war has very adversely affected the memory or the intelligence of this child, Ted Hughes, in his early childhood. And he was aware about the fact that war brings only destruction in the two countries, killing the people of the two regions, and the harmony of both the countries where the war exists becomes or gets vanished. He is of the opinion that none should go against none. He says in certain of his poems that nature has given man a world to see, a world to enjoy, and no one has right to snatch the another man's or another person's rights or his food. So, dear students, this was about the poet. Now, let me brief you about the summary of the poem. As you know that the snowdrop is not actually a drop of the snow. It is simply a plant, a small delicate plant on the land in the harsh or severe cold, where it resists the coldness or the brittle coldness or the brittle shrivingness of the winter or of a cool season or cool season. So, dear students, this poem has been written by Hawkes in 1930, where he represents the crucial nature. In this poem is actually the representation of crucial phase of the nature in the world, where poem Snowdrop especially gives us the image that how the winter, that how the chilling winter, the how the coolness of the winter or the snow, it affects the every creature in the universe, whether it's an animal or a plant. He says that everything, every creature in the universe or on the land gets affected by the chillness or by the coldness of the severe cold season. In this poem, Ted Hawkes has given the reference of the two animals. One is weasel and it is crow. We know that weasel is simply, it's an animal which is by nature a mammal. It gives birth to young ones who feed on the weasel by sucking her milk. And there is crow. The crow is a bird, you know that. Here, both the weasel and crow have been considered here the motionless due to the severe coolness of the winter. And further, the point says that they have become motionless and they have become so weighing. The weight of the two animals have become so much that
they have become a brass mold in brass molten form. Brass, you know, brass is simply a metal, heavy metal. So he has given this image of weasel and crow that represents the whole creatures in the universe. How do they get affected by this cold or severe winter or severe cool, cool season? Snowdrop actually a small plant that fights in this cold season against the brittleness or against the severe coolness of this winter. It has a small head, a metallic a small head, which is actually downwards at one side with a yellow flower. Snowdrop wants to convey us a message that everything, every person in this universe, even a weak person can be victorious over a adversity or over a challenge, but the need for him is to become courageous and he should be determined. This is, in other words, we can say it's the moral of the poem. So, dear students, the moral of the poem, as you can see on the display, that moral of the poem Snowdrop is one can become, here you can see, one can become victorious over a big adversity or challenge, but the need is courage and determination. So प्यारे बच्चों, ये पोइम जो एक्चुअली है लिखी जो है स्नोड्रॉप, एक पोइम स्नोड्रॉप जहाँ पर जो एक छोटा सा पौधा है जो सर्दियों में अपने आप को ज़िंदा रखता है और ये चैलेंज के साथ ज़िंदा रहता है कि मैं सर्दी को अपने आप पर हैवी नहीं होने दूंगा। तो अगर हम मॉरल के हिसाब से देखें, तो मॉरल के हिसाब से अगर हम देखें तो इसका मॉरल पोइम का ये बनता है कि हर एक इंसान या हर एक शय, छोटी शय, कमज़ोर शय भी अगर अपनी हिम्मत से काम ले, उसमें डिटर्मिनेशन हो, उसमें हौसला हो, तो वो हर चीज़ पर फतह पा सकता है। तो लिखी है ये एक पोइट ने जिसका नाम है टेड, जो 1930 में पैदा हुए, जिनके फादर एक्चुअली एक वॉर हीरो थे। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में उन्होंने लड़ाई लड़ी है, तो उस लड़ाई की वजह से उसका जहन बहुत परेशान हो चुका था। उसने उससे ये अख़ज़ कर लिया कि लड़ाइयाँ जो हैं, जंग जो हैं, ये बस दोनों मुल्कों को तबाह करते हैं और लोगों को मार देते हैं, और उस मुल्क में जो खूबसूरती होती है पहले से उसको मुश्किल तौर से वापस लाया जा सकता है। तो बचपन से इस जो ये पोइट है, इसको बचपन से प्यार था एनिमल्स और बर्ड्स के साथ। तो ये पोइम जो अगर इसकी समरी पे नज़र डालें तो इसकी समरी ये है कि कुदरत की बनाई हुई चीज़ों में से एक चीज़ जो है कि एनिमल्स और बर्ड्स या हर एक चीज़ जो दुनिया में है, उनको सर्दी किस तरह उनको ख़त्म कर देती है। तो नेचर को एक ऐसे चीज़ के साथ जोड़ा है यहाँ पर पोइट ने कि नेचर में जितने भी क्रिएचर्स हैं उनको किस तरह ये सर्दी जकड़ लेती है या उनको किस तरह वो असरअंदाज करती है। तो यहाँ पर जो दो एनिमल्स की बात की है इसने, एक क्रो और वाइजल की, तो उन दो एनिमल्स की वजह से वो बोलता है कि ये बेचारे मोशनलेस बन चुके हैं, ये मूव नहीं कर सकते हैं। और ब्रास जो है, मेटल जो एक है, उसके साथ मुशाबियत दी है इनकी कि जैसे ये वीज़ल और ये क्रो जो एनिमल्स हैं, या इस तरह से जो बाकी क्रिएचर्स हैं दुनिया में, वो सर्दी के मौसम में इस तरह हैवी हो जाते हैं कि जैसे ब्रास मेटल जो है, जैसे उन जैसी या उस ब्रास की तरह जैसे वो एक ही जगह पर रह जाते हैं। दे हैव बिकम मोशनलेस। तो स्नोड्रॉप जो एक्चुअली इसी चीज़ का यहाँ पर एक रिफ्लेक्ट करता है हमें कि मैं एक छोटा पौधा हूँ और मेरा सिर आप देखिए, जहाँ पर उसने ड्रॉप्स वो राउंड शेप्ड का कहा है कि आप मेरी तरफ देखिए कि मैं हर एक चीज़ पर, सर्दी की हर एक चीज़ पर हावी हुआ हूँ, मुझ में हिम्मत है। इसी तरह से आप भी हर एक चीज़ अपने आप में अगर हिम्मत हौसला रखे, तो उसमें डिटर्मिनेशन हो, ये हौसला हो, वो ये इरादा करे कि मैं हर चीज़ पर फतह पाऊँगा, तो इंसान के लिए या किसी चीज़ के लिए मुश्किल नहीं है। तो इससे आगे हम जाएंगे दूसरे लेक्चर में। तो मेरे